Hello students, today we introduce a new chapter, graphs. In mathematics, we use different types of representations, including visuals to better understand and analyze information. Graphs are one such visual representation, and graphs help us define relationship between two quantities. Now, how to draw a graph? To draw a graph, we require two types of data or quantities or variables. Usually, we take the independent variable data on the x-axis and the dependent variable on the y-axis. What is the independent and dependent variable? Suppose two variable side of a square and area of a square. Suppose side is 2, then area is 4, because side is square equal to area square, because side power 2 is area. If we take side is 4, area 16, 6, area 36 in centimeter square. 8, 64, 10, 100. Value of area of a square is depend on the value of side of a square. So area of a square is dependent variable and side is independent variable. Now स्केल, ग्राफ में हम स्केल का चयन कैसे करेंगे? अगर इसका ग्राफ बनाने जाए तो मैक्सिमम वैल्यू 100. अगर हम स्केल 1 ले तो इसके लिए हमें ग्राफ में 100 के लिए 100 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी. एक कॉपी में, छोटी कॉपी में अप्रॉक्सीमेट 15-16 बॉक्सेस रहते हैं, तो 100 बॉक्स पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब हम 1 स्केल नहीं ले पाएंगे. इफ़ वी चूज़ 2, तो 200 के लिए हमें 50 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि नहीं हो पाएगा. 5 में 20 तो भी नहीं हो रहा है. अगर हम स्केल 50 ले लेते हैं, 1 बॉक्स 50, तो 2 बॉक्स में ये 100 हो जाएगा. 1 बॉक्स में ऐसे 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं. इसका मतलब 1 बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. तो फिर उसमें 4 को रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा. तो हमें और बहुत कंडेंस्ड हो जाएंगे. हमें स्केल इस तरह से चूज़ करना चाहिए कि बिगेस्ट वैल्यू उसमें कवर हो जाए और मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम जो एरिया है ग्राफ का वो यूज़ हो. तो स्केल चूज़ करते समय 2 बातों को ध्यान में रखना है. फर्स्ट, कि मैक्सिमम एरिया हमारा कवर हो और जो बिगेस्ट वैल्यू है वो ग्राफ में ज़रूर आ जाए. नाउ एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 3. The table below shows simple interest on a deposit of rupees 300 at the interest rate of 5% per annum. Time in years 0, 1, 2, 3, 4, 5
and simple interest in rupees 0, 15, 30, 45, 60, 75. Draw a graph between time and simple interest. Since all values of both variable are positive, so all points lies on first quadrant. इसलिए ग्राफ बनाते समय हम मैक्सिमम एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट को रखेंगे. फर्स्ट वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस. X axis, Y axis. We take on X axis time in years and Y axis simple interest in rupees. Scale on X axis one big square equal to 1 year and on y-axis one big square is equal to rupees 10. 1, 2, 3, 4. Now first point 0, 0. Second point is 1, 15. Third point is 2, 30. And next point is 3, 45, 4, 60, 5, 75. Join all these points This is the required graph. Question number 4. Find the value of x square for different values of x and draw a graph between x and x square. The values of x are integer numbers between -4 and +4. In this question, table is not given. So, step 1, we form table. Solution 4. Table of value of x square for different values of
x varies from -4 to +4 x square -4 -4 whole square -4 multiplied by -4 16 -3 9 -2 4 -1 1 0 0 1 Here x is independent variable and x square is dependent variable. So we take x on x-axis and x square on y-axis. Value of x is negative and positive both, and value of x square is positive. So our points lies on first and second quadrant. So we draw maximum area of first and second quadrant. First point is -4 16. Next point -3 9. Between 8 and 10. Next point -2 4. -1 and +1. 0 0. 1 1. 2 4. 3 9. 4 16. Now join all these points by free hand. This is the required graph. Question number 9. The temperature data for a particular day in a city are shown in the graph. Answer the following questions based on the graph. First, what was the city temperature at 6 a.m.? यहाँ पर ग्राफ कॉपी जैसे बॉक्सेस में डिवाइड नहीं है, इतना बॉक्स में तो डिवाइड नहीं कर सकते. हम लोग टेम्परेचर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. Six a.m.
Value of one big part is 5 and one big part is divided into 5 equal parts. Value of one small part is 1. Then 21, 22, 23. The city temperature at 6 a.m. is 23 degree Celsius. What was the city temperature at 3 p.m. in the afternoon? (30, 31, 32). The city temperature at 3 p.m. in the afternoon is 32 degree Celsius. At what time was the temperature 30 degree Celsius? 30. At 12 p.m. At 12 p.m., the city temperature was 30 degree Celsius. What would have been the temperature at 12 midnight? Midnight, 27 degree Celsius. What was the temperature at 9 p.m. at the night? (28 degrees Celsius). Thank you for watching my video.